all the best for the semi-final. Thanks. And in the pre-departure press conference, you had spoken about the four spinners and the confidentiality behind it. Is it now the time to reveal the trump card? For why you four spinners आप लेके आ रहे हैं उसके लिए आप बोले थे. अरे टीम पांच पांच सीमर्स लेके आते तो पांच सीमर्स थोड़ी खेलते. But you had said there is a secret behind it. कुछ सीक्रेट नहीं है. अभी कंडीशन 3 स्पिनर तो खिलाया ना. अभी आप न्यूयॉर्क में 2 स्पिनर खेल रहे थे, यहाँ पे 3 स्पिनर खेल रहे, तो ज़रूरी लगा 4 स्पिनर खिलाने का तो खिलाएंगे. बट अभी विल सी, विल असेस. अभी तक पिच ठीक से देखा नहीं, अभी कवर करके रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक, तो अभी उस पर रोलिंग वोलिंग हो रहा है, तो विल असेस, विल सी व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन. Nikhil Nas. Rohit, it's a repeat of the last T20 World Cup semi-final. For you as captain as well as for the team, what has changed from then, from 2022 to 2024? Honestly, I mean, not a lot has changed because, see, when you want to approach, whenever you approach an international game and this being ICC T20 World Cup, we've tried to do play with very free mind in the last 2 or 3 years that we've played our T20 cricket and even the ODI cricket as well. So not a lot has changed as such. It all depends on basically what the condition has to offer. We saw, throughout this tournament, the conditions had its own challenges. New York was completely different, and now we've come here in West Indies. It's been totally different, and we want to do that. We want to be a smart cricket team. We want to assess and play like when we played the last game, and even before that as well. The moment we realize it's a good pitch, we want to play the way we play, and that is up for all you guys to see, how we want to play. And I've tried and kept things very simple for myself personally as well, and also for the team, because there is a lot of cricket being played in that group. These guys have played a lot of cricket, a lot of high pressure games as well. So there's not much that you need to discuss as such. You got to try and give them the role clarity, which I think we have done pretty well, very clearly as well. And then obviously we want to rely on them making good decisions on the field. You don't want to keep talking to them about, you got to do things differently and all of that. Of course, you have to have an open mind when you want to do things, but as much as the team is concerned and I'm concerned, I think our priority was to keep things very simple and give them the freedom that, you all want playing this format. And everyone knows in the squad that, they have to get the job done, but the job getting done has to be done considering various factors. And I thought throughout this tournament, we have done that extremely well. So I don't think we need to change what we did in 2022 to 2024 now. Obviously, everyone understands what they need to do, and we back them to make those decisions on the field and rely on what they feel at that particular moment, what they want to do. GS, Vivek and Matt Roller. Rohit, it's very unlikely that someone like Virat hasn't got the big runs which he usually gets. But every time he's tried to get out, he's got out, he's just tried to push the needle in the power plays. Someone like a Rishabh Pant has got out twice trying to play the reverse sweep. Is that a particular template as a team management you want them to keep playing, which may be against the grain, but you want them to keep playing and keep putting the foot on the accelerator so that no matter how many wickets you lose even in the power play, everybody will go and try and press the accelerator despite the number of wickets which has been fallen in the power play, rather than trying to use the safety first net? No, see, again, it all depends on the conditions that are there in front of us. I know it sounds very boring for me to talk about conditions, because that do matter a lot. Because in New York, we saw what the winning score was. So there, for us to think, nahi jaake ghumayenge, ye karenge, wo karenge, it is not sensible. So we want to be a smart cricket team. We don't want to just talk
in one language, which is to just go and swing the bat. I think it is important for us to understand कि क्या सामने क्या है, करना क्या है उस टाइम पे. And I have spoken about experience in this group, and we rely on that experience from each player to go out and make that decision, whether it is playing the reverse sweep, whether it is bowling a yorker, whether it is bowling a bouncer. We rely on those individuals to make that decision. As a captain, coach, once the game is started, there is hardly you need to talk about what you need to do. Yes, certain aspect of the game you can discuss, but not a whole lot where you are sitting there and planning and stuff like that, because obviously the rules are there, it's quite strict. There is a possibility if you get 3 warnings, you will lose 5 runs. And the 5 fielders rules as well, which is, if you are a overshot, 1 more extra fielder comes inside. All of that is there. So, you don't need to discuss too much when the game is on. We discuss a lot of stuff outside of it. Today we had a training session. We're talking to the players what is expected out of them. But again, like you said, if it is all about feeling good when you are batting. I felt good last game. I was taking on my chances. So that is how it works. It worked for me last game. It might work for someone else in this game. So that's how it works. You have to understand that. And that is where I keep saying that, we rely on players to make those decisions, whether reverse sweep is a good option, whether coming down the track and hitting straight is a good option. So all of that put together, we rely on our 8 batters to make those decisions on the field. And same goes with the bowlers as well. We've got good 6 quality bowlers. Shivam Dubey is the 7th one, who hasn't bowled yet, but he's a good bowler. He's played a lot of first-class cricket, taken a lot of wickets. So yeah, we've got good quality amongst our group, and I personally want to rely on that quality and their sharp brain to make those decisions. रोहित भाई, इंदिमा मुलक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है. अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार. सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे. तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं. इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है ये. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से. रोहित इकडे. रोहित, जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है, जब बम्बई भाषा में जिससे बोलते हैं कि प्लानिंग होने के बाद ज़्यादा सोचने का नहीं, बिंदास खेलने का, क्या वही नज़र आ रहा है? क्योंकि संभल के खेलने वाली ये T20 क्रिकेट नहीं रही है, जैसे टीम खेल रही है उस हिसाब से क्या बोलोगे एज अ कैप्टन? सॉरी, एक बार वापस. मैं बोल रहा हूँ कि T20 क्रिकेट बहुत सोचकर, बहुत समझकर, संभल के खेलने वाली बात नहीं रही है. हाँ. प्लानिंग करो और फिर बिंदास खेलो, ये टेम्पलेट चल रहा है. क्या बोलोगे आप? हाँ, कुछ हद तक बिंदास खेलना ज़रूरी है, बिल्कुल. और ये माहौल हमने टीम के अंदर क्रिएट किया हुआ है पिछले कई सालों से. अभी कॉन्स्टेंटली हम इस चीज़ के बारे में बात करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, बिंदास खेलना है. ये फॉर्मेट ही वैसा हो गया है अभी कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस उतना मैटर नहीं करता. अगर किसी ने कर दिया तो अच्छी बात है, बट उस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि मुझे 70-80 रन बनाने हैं, मुझे 90 रन बनाने हैं या 100 रन बनाने हैं. आई थिंक बांग्लादेश वाला जो गेम था हमारा, वो आई थिंक परफेक्ट गेम था. मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि वहाँ पे एक ही लड़के ने 50 रन बनाया, ठीक है, बाकी सब लोग ने 20-30 बनाया, और फिर भी जाके हमने 198 बनाया, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर. तो आई थिंक मुझे एज अ कैप्टन ये चीज़ काफ़ी पसंद है, क्योंकि जिसका जो रोल था, वो रोल सभी लोगों ने वो रोल किया. और तभी भी किसी 2 बंदे ने 50 या 70 या 80-90 रन नहीं बनाए.
एक बंदे ने 50 रन बनाया और उसके बाद 6 बैट्समैन ने 20-30 बनाकर हम 198 पे पहुंचे। वो इसीलिए क्योंकि आई थिंक जो रोल की हम बात करते हैं कि एक ये प्लेयर का ये रोल है, इसको ये फेज में जाके ये करना है, वो उसने किया, तब जाके हमारा वो स्कोर पहुंचा। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट हमारे टीम के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि अगर 8 बैट्समैन हम खेल रहे तो वो अपना अपना अगर रोल निभाएंगे तो हम जो स्कोर हमें चाहिए वो स्कोर के आसपास हम पहुंचेंगे। वैसे ही मैं बॉलिंग को भी वही देखता हूँ कि देखिए किसी का दिन नहीं है तो उसको शायद 4 ओवर डालने का मौका नहीं मिलेगा, 1 या 2 ओवर डालने का मौका मिलेगा, तो उसको वो 1 या 2 ओवर सही तरीके से डालना है। और ये चीज़ के बारे में मैं प्लेयरों से बात करता रहता हूँ कि मुझे आज तुम्हारे से 1 या 2 ओवर चाहिए, बट वो 2 ओवर टाइट ओवर चाहिए जहाँ पे आप प्रेशर बना रहे हो ताकि दूसरे बॉलर दूसरे एंड से आके विकेट ले सके। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग की बात होती रहती है टीम में। तो आई थिंक टीम में मैसेजेस जो है हमारे वो बहुत क्लियर है और ऐसे ही है कि जिसका जो रोल है वो रोल जाके निभाओ। किसी का दिन हो सकता है कि वो उस दिन वो 100 रन बनाए, किसी का हो सकता है कि वो 70-80 रन बनाए, बट हमारा फोकस वो इंडिविजुअल स्कोर पे उतना है नहीं, रोल पे है कि रोल आप कैसे निभाओगे।